So ji, let's start. Thank you. So we were studying this partition function. Okay? And you remember, do you remember the basic functionality of what happened in this partition function? Can anybody tell me? और हम पिवट सेलेक्ट करते हैं सबसे पहले रैंडमली कोई सा भी ये, लेकिन ये है कि पिवट हमारा इस तरह हो कि हाफ हाफ इधर हो जाए, ऐसा भी नहीं कि वर्स्ट केस में कि सारे एलिमेंट्स एक साइड पे चले जाएं, पिवट साइड मतलब एंड पे सेलेक्ट कर लें या एक्सट्रीम लेफ्ट पर या राइट पे पिवट सेलेक्ट कर लें. Like we don't have a control on where the pivot will ultimately come. ठीक है? Our wish is that it comes in the middle, but since we are selecting the last element as the pivot, so the last element can be the smallest element or the largest element as well. So there is a chance that it will come in the sides, one of the sides. Other than this, how does it work in terms of the algorithm, in terms of the loop, the code? Left side one. Right side. ठीक है. So you're correct. So we have some array. So which element do we select as the pivot? Last one. So this is our pivot that we call as V. So V is just a notation for the pivot, I guess, because of the V inside the pivot. Then we have some placeholder for the pivot that is called a Q. And we also have some other index that is called I. ठीक है? So I is incremented every time, Q increases sometimes. So whenever, which element do we compare? Which element do we compare A of I with G? Not Q, with V. So we compare it with V element. So if A of I is less, we have two situations. If AI is less, A of I is greater than or equal to the pivot. I guess this is less than or equal to the pivot, and this is greater than the pivot. So we have two situations. So in this first situation, okay, that's the simplest one. So in this case, we do nothing, increment I. ठीक है? What will happen if we have a element that is less than the pivot? So we exchange these two elements. So we do exchange A of Q and A of I, and we increment something. Can you, anybody tell me what you increment? Q.
Q plus plus. So the second step is that we increment Q by 1. So, so now our goal is to write the partition function, which gets an A, a begin, and an end. So who can write its code? कौन इसका कोड या सूडो कोड लिख सकता है? Okay, I'll write the code. First of all, any question regarding this part, the basic understanding? I hope most of you have revised the slides. Look, this is, by the way, chapter number 7. Okay? So this is, by the way, chapter number 7. I guess I can just partition A, begin, and so our first step will be to store the pivot in a variable. So B is equal to A of n, and we initialize Q as 1. Because in the start Q is this first element always. Then we have a root I is equal to 1 till not 1, begin till end I plus plus. And in each step we check if A of I is less than or equal to the pivot. If it is, we exchange A of Q with A of I, and we do Q is equal to Q plus 1 or Q plus plus, and that's pretty much it. Nothing too much. So just a small piece of code. Okay? But it will do our task. I hope you understand that. So how long will it take? So how long will it take at the root? So it will take order of n time. We have the whole array. And what will happen if after the first partition function we have array that is divided exactly into 2? So in that case, how much? N by 2. So each of the subsequent partition function will take n by 2, and similarly the time taken by a single partition function will start reducing as the area that we are working on is reduced. Okay? So let's open this thing. So we start with Q is equal to 1, and basically we are assuming that all elements are greater than the pivot. Then we scan the array
from left, starting at position number 2. So this is essentially what is happening in the loop. If an element is less than or equal to the pivot, then we swap it with the current position. So this is basically A of Q, and this is just Q plus plus. Okay? This is what it's saying. And when you look at the code, Sir, G, loop begin पे start नहीं होगा first element से हाँ begin से start होगा. I guess यहाँ पर थोड़ा सा begin होना चाहिए था, क्योंकि you are right, ये root के ऊपर तो 2 से start होगा, लेकिन बाद में वो begin से start होगा. The begin and the end will change. So this is a mistake, I think. Yeah, you are right in that case. सर एक और क्वेश्चन है हाँ जी. फर्स्ट केस में तो begin फर्स्ट एलिमेंट है और end का एलिमेंट है. जैसे जैसे आइडियल केस में अगर सब एरिड इक्वली डिवाइड होती है तो begin हमेशा फर्स्ट एलिमेंट ही नहीं होगा. No. The reason is कि जब वो मेरे पास ideal case होता है तो मेरे पास my pivot will come right in the middle. So for this part we have begin over here. So this is begin slash, and then for this one we have begin over here. Okay, because we have 2 subarrays now. ठीक है. And similarly अगर वो ideal case में जाता है तो वो begin change होता जाएगा. So I think what I wrote and what this code is writing is pretty much the same. It should be. So it starts with begin, then we have the pivot as the end. We run the loop from begin and end. If A of I is less than the pivot, we swap, we do this, and I think I missed this thing in the end, that we return the value of Q, the position of the pivot. ठीक है. और quick sort, the recursive function we have already seen is that whenever we are not in the base case, we apply the partition function, we get a Q value, then we do a quick sort, the recursive function from begin to Q minus 1, and another quick sort recursive call from Q plus 1 till N. Okay. So now comes, any question till so far? सर जो हमने तरीका पढ़ा कि लास्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो इस केस में अगर हम क्विक सॉर्ट को एक सॉर्टेड एरे लेते हैं जो कि 1 2 3 4 5 6 7 है कोई नहीं, तो अच्छा नहीं परफॉर्म करेगा. would that be the absolute worst scenario के लिए? अगर sorted array देंगे तो yes, that would be the absolute worst case scenario. And that's the reason why I said that in real world usage of quicksort, we either shuffle the array so that it's no longer random, or we pick a pivot randomly. And obviously the code is not such small in that case. ठीक है. तो आगे है. So as I said that this function alone at the root takes n time, and we have a worst case scenario in which the pivot always comes at the beginning or the pivot comes at the end. So we have either a pivot that's right at the end or a pivot that's
somewhere over here. So these are the two possibilities. And as a result of this partition function, the size of the array we always get is n minus 1. So देखें ना, मेरे पास जब वो end पर pivot आता है तो मेरे पास right side पर तो empty आ जाता है, लेकिन यहाँ पर मेरे पास n minus 1 elements आ जाते हैं. ठीक है? This is like the worst case. And when we write the recursive equation for it, T of n is equal to T of n minus 1 plus theta of n. How did this equation come? This is for the worst case only. सर वो n-1 बार बार फिर रिकर्सिवली डिवाइड होता रहेगा तो उसकी वजह से हर स्टेप में t So n this minus is for the root case. As I said, always say that the recursive equation is written for the root case, always. So this is the time that partition takes. And this is the time that we quicksort takes for a of I till n minus 1. ठीक है. So let's see what this comes out to be. So right at the beginning, it takes C of n times, theta of n times for partitioning. One side becomes empty, the other side has n minus 1 elements, so that will take C of n minus 1. Again, one side will become empty, the other side will have n minus 2 elements, so the partition function will take n minus 2 elements, and this will go all the way up till 3n, no, sorry, C into 3, C into 2, so just decreasing it by one element at each step. At this step we have one array is empty and the other array reaches its base case. Base case क्या है मेरे पास? ये मेरे पास एक array है जो कि single element array है, so it doesn't need any work, so we can stop. So that's the base case. The recursive function will stop it. Imranullah, why so sad? सर सुन रहा हूँ आपको. बेस केस का वो. तो ये क्या हो जाता है? यहाँ तक ये बात समझ आ रही, हम एक्सपैंड करते जा रहे हैं, तो वो मुख्तलिफ at different levels of the recursion, the partition function takes increasingly smaller time. ठीक है? It's always less than n time. And the recursive function, quicksort function, that's just a constant time function. So that's why I just say cross, because that will just return something. ठीक है? तो जब मैं ऐड करता हूँ सारों को,
तो ये मेरे पास आ जाता है C of n minus 1 plus C of n minus 2 C of 3 plus C of 2 ये किसके बराबर है? NCN So ये so ये अरिथमेटिक सीरीज n into n minus 1 divided by 2 हो जाएगा n By into 2 TN. n minus 1 divided by 2 हो जाएगा बिल्कुल ठीक है। किस तरह हो जाएगा? मेरे पास और ये जो है दिस इज द अरिथमेटिक सीरीज minus 1. So it's the arithmetic series, but 1 is missing. yes ठीक है? The only thing that's missing is 1. So I have told you how to handle this. What do we do? इमरानुल्लाह बताएगा भी नाराज है तो मैं चाहता हूँ जरा बातचीत करें मुझसे। अरिथमेटिक सीरीज है लेकिन 1 मिसिंग है। How do we simplify it? Sir, n square divided by 2 क्योंकि माइनस What is the formula of arithmetic series? n into n minus 1 divided by 2 N into n minus 1 divided by 2 and n into n plus 1 divided by 2. N into n plus 1 divided by 2. But this also includes the 1 inside it. तो हाँ तो हम इसके साथ n minus 1 कर देंगे और फिर वो ये we have already done this once, okay? But let me just revise it. So this will become 2 सर n square by 2 आएगा n square minus 1 divided by 2 n square minus 1 divided by 2 n into n minus 1 divided by 2 नहीं आना चाहिए। n square plus n minus 2 आएगा सर डिवाइड बाय 2 n मल्टीप्लाई होगा n से और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा जी लास्ट से n एक मिसिंग है तब n into n minus 1 हाँ चलो इसको तो ये मेरे पास anyway ये मेरे पास n square plus n by 2 minus 1 आ जाता है। ये मेरे पास फिर theta of n square आ जाता है। तो ये मेरे पास जो है वो टाइम complexity आ जाती है and this time complexity is as bad as so this is as bad as insertion sort.
बेस्ट केस में क्या होगा, equally हमारे पास इक्वल डिवाइड होता जाएगा, so in the best case scenario, हाँ तो इस किस्म की चीज हमारे पास होती है, आहिस्ता आहिस्ता एक एक खत्म होता जाता है। ये वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है, कुछ सिंप्लीफिकेशन के बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इसी तरह लिखा हुआ है। और बेस्ट केस सिनेरियो कौन सा है हमारा, equal partition. बिल्कुल हमारे बीच में आ जाए, परफेक्टली वो परफेक्टली डिवाइड करता जाए, एंड विल टेक सम assumption that both halves are n by 2 sides. In reality, one of them will have one less element because one and pivot will get removed. ठीक है, तो अगर 8 है तो वो 7 बच जाएंगे, तो 3 एक तरफ आ जाएंगे, 4 दूसरी तरफ आ जाएंगे, लेकिन that doesn't make a difference. तो अगर हम assumption करें कि वो equal division होती है, तो हमारे पास जो सब पार्ट्स बनते हैं वो मेरे पास n by 2 के बन जाएंगे। और what will be our recursive equation? Come on, tell me. Tn T of n, Tn by 2 T n by 2 plus theta n. plus theta n. One thing is missing. We have two parts of size 2 t. n by 2. तो ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है। Have we seen such a recursive equation before? Where? merge sort. Merge sort. ठीक है? So this is a mathematical equation, a recursive equation, but yet it is a mathematical equation. If that equation, which looks exactly like this, solved into n log n, so this must also solve into n log n. It's the same equation. ठीक है? So we don't need to redo the calculations again and again. So we can just simply write Sir, 2t n by 2 will turn into n log of n, right? no. This whole thing will turn into n log n. ठीक है? थोड़ा अगर मर्ज सॉर्ट के हम याद करें तो हमारे पास Cn, 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 वो हर लेवल पर Cn, Cn बनता है, बाइनरी ट्री बनती है हर लेवल पर Cn, 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 और log n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लेवल्स हैं, तो हर लेवल n टाइम लेता है, और नंबर ऑफ लेवल्स log of 2n है, तो n into log of 2n. So I think we don't need to discuss this in any more detail. Here I have written that we are using master method, so even if you use master method, the same thing. So maths has this property, if one equation solves into a particular form in using one technique, by using another technique, it will should again give you the same answer. It shouldn't be a different answer. तो
पास दो चीजें आ जाती हैं, वर्स्ट केस is n square, best case is n log n. We need to know what is the average case. And to do this correctly, we need to apply a lot of probabilistic analysis, ठीक है? Which is difficult, so I'll do something a bit simpler. So we will do this. Assume a very bad case. So we'll assume a very bad case, not exactly the worst case, but very near to the worst case. So not worst case, but near to worst case. और अगर if this bad case has good time, then we can reduce that in average the time complexity is ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि अगर हमारे पास एक सिचुएशन है जो कि खासा बैड है, इतना बैड है कि बस वर्स्ट केस नहीं है लेकिन वर्स्ट केस के एन करीब है, अगर उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो खासी ख़राब आ जाती है, तो जो एवरेज केस होगा वो उससे बेहतर केस होगा, बेहतर सिनेरियो होगा, तो उसमें भी टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास मुनासिब होगी। तो जो सारा इसका कंक्लूजन होगा वो ये होगा कि एक्सेप्ट द वेरी वर्स्ट केस हमारे पास एक अच्छी मुनासिब टाइम कम्प्लेक्सिटी दे रहा होता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसको सादे अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो हम इस तरह कह सकते हैं कि क्लास में जो सबसे वर्स्ट बच्चा है तो वो तो एफ लेगा, लेकिन उससे जो 2 नंबर भी ऊपर है तो वो सी या वटेवर ग्रेड के साथ पास हो जाएगा। तो मतलब अगर वो भी मुनासिब ग्रेड के साथ पास हो रहा है जो कि 2 नंबर ऊपर या 5 नंबर ऊपर ले रहा है बिल्कुल नीचे लोएस्ट ग्रेड वाले बंदे से, तो वो मेरे पास हो जाता है, लेकिन वो एक बंदा जो है वो रगड़े में आ जाता है। तो जो आपने स्टेटमेंट लिखी है इसके मुताबिक सर हमारा वर्स्ट केस जो एवरेज केस होगा तो हम उसको कह सकते हैं n स्क्वायर बाय 4 या 8, क्योंकि वो वर्स्ट केस के नज़दीक है लेकिन उतना वर्स्ट केस n स्क्वायर बाय 8 और समथिंग आप n बाय 8 यस हम इससे भी खराब लेंगे। आपने कहा है कि n बाय 4 हम ले लेते हैं। n स्क्वायर क्योंकि वर्स्ट केस हमारा n स्क्वायर है। देखें हम वर्स्ट केस और बेस्ट केस किस बेसिस पर कर रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं कि पिवट किधर आ जाएगा, पिवट लोकेशन आफ्टर पार्टीशन decides if it's worst case or best case or something else। ठीक है,
चीज तो ये हो गई। इधर देखें, तो आप क्या कह रहे हैं, ये मेरे पास n है, आप बताएं आपका पिवट किधर लाई कर रहा है, n स्क्वायर कहाँ से आ रहा है? इन्हीं समय टाइम की बात है, बेगो फॉर की बात है। ओके उस केस में क्या था कि हमारे वर्स्ट केस में बेगो फॉर किया एन स्केयर नहीं, हम इस लिहाज से बात कर रहे हैं कि हमारे पास पिवट जो है वो n दरमियान में आ रहा है, n आखिर में आ रहा है या कहाँ पर आ रहा है, और हम बात कर रहे हैं कि हर वक्त वो n दरमियान में आता है या हर वक्त वो n आखिर में आता है, ठीक है। तो अब हम जो वेरी वेरी बैड केस ले रहे हैं वो हमारे पास एक ऐसी पार्टीशन में रिजल्ट करेगा जो कि स्क्यूड होगी, मतलब किसी एक साइड पर। किसी एक साइड पर बेहतर होगा। तो हमारी जो अजम्पशन होगी कि वो तो बैड केस जो हम ले रहे हैं वो है कि ऑलवेज पार्टीशन एंड एलिमेंट्स into n by 10 and तो ये मेरे पास अगर हो तो दिस मीन्स के मेरे पास 10% एलिमेंट्स जो हैं 10% मेरे पास लेफ्ट साइड पर आ रहे हैं और वो ऑलवेज आ रहे हैं। तो हर दफ़ा जब मेरे पास पार्टीशन होता है तो वो 10% मेरे पास एक साइड पर आ रहा है और जो बाकी 90% है वो मेरे पास दूसरी साइड पर आ रहे हैं या राइट साइड पर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हमेशा मेरे पास इस तरीके से पार्टीशन कर रहा होता है। क्यों लॉस्ट हो गए? तो ये जो पार्टीशन आप कर रहे हैं पिवट किधर रखा हुआ है? सर ये जो आपने डायग्राम बनाया था CN-1 जो वो पुरानी वाली diagram। वर्स्ट केस वाले में, हाँ। तो उसमें सेकंड आइटरेशन में मतलब रिकर्सिव में क्या वो उस वक्त भी वर्स्ट ऐसे हो सकता है कि पहले पार्टीशन में पहली दफ़ा जो पार्टीशन अप्लाई हो तो वो सबसे राइट में हमारा पिवट आ जाए और वो वर्स्ट केस सिनेरियो, लेकिन जब वो रिकर्सिवली करता जाए तो पिवट की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती? हो सकती है, लेकिन हम बड़ी आइडियल हम हर दफ़ा कह रहे हैं कि वो हम हर दफ़ा जब हम कह रहे हैं कि बेस्ट केस तो हम कह रहे हैं कि हर दफ़ा वो दरमियान में आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेस्ट केस में और वर्स्ट केस में, बेस्ट केस की बात करते हैं तो एक है बेस्ट केस के हर दफ़ा वो एन दरमियान में आ रहा है। तो पहली दफ़ा पार्टीशन हुआ, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना कहीं और जाएगा। पॉसिबिलिटीज है, लेकिन हम एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं। एक केस मेरे पास आइडियल, और एक वर्स्ट, एक मेरे पास वर्स्ट केस है। अब वो जो दूसरा सिनेरियो तो एक और सिनेरियो है जो कि बहुत रेयरली होगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास अगर 100 एलिमेंट्स है तो जब पहली पार्टीशन होगी तो यहाँ पर मेरे पास 10 एलिमेंट्स आ जाएंगे और फिर यहाँ पर मेरे पास कितने आएंगे? 90 आ जाएंगे। तो ये मेरा बैड केस है। फिर मेरे पास जब ये पार्टीशन होगा तो इसकी कितनी डायमेंशंस आएंगी? क्या इसकी? जी, तो ये मेरे पास एक अकेला आ जाएगा यानी ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर मेरे पास 9, थोड़ा सा लंबा बना लेते, ये 9 आ जाएंगे। जब ये पार्टीशन होगा तो 10% एक साइड पर आ जाएंगे, तो मेरे पास 80% नहीं,
9 इधर आ जाएंगे और 81 और मेरे ख्याल से 81 इधर आ जाएंगे, ऐसे ही है ना? यस सर ठीक है, तो ये है। और फिर इसी तरह जब ये पार्टीशन होगा तो 10% इधर आ जाएंगे, 90% इधर आ जाएंगे, इसका भी वही सर 10%। तो ये मेरे पास एक आइडियल सिचुएशन है जो कि रियलिटी में जिसको कहते हैं ना मिलियन ईयर्स में एक दफ़ा होगा या मिलियन टाइम्स आप अरेज जनरेट करेंगे तो वो कहीं एक दफ़ा होगा या शायद वो भी ना हो, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एनालिसिस हम ये कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट लाइक कि हम जब बेस्ट केस लेते हैं कि वो एन दरमियान में आएगा तो ये बहुत नामुमकिन सी बात है, तकरीबन नामुमकिन के करीब बात है कि एन दरमियान में हो रहा है, लेकिन हमारा भी और हर दफ़ा वही काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक बड़ी आइडिया ऐसी सिचुएशन अरे तो आ सकती है कि जिसमें वो मेरे पास इस तरह का बिहेवियर आ रहा हो या वो इक्वली हमेशा डिवाइड हो रहा हो। मतलब एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी तो है ना, या मैं खुद से एक ऐसे अरे क्रिएट कर सकता हूँ मेहनत करके जो क्विक सॉर्ट लगाएगा तो वो इस तरह से बिहेव करेगा। तो अगर मैं खुद क्रिएट कर सकता हूँ तो कहीं से मेरे पास यूज़र इनपुट के तौर पर भी आ सकता है, कहीं किसी सर्वर से भी आ सकता है उस नेचर का। सो सारा है कि सारी कहानी तो ये है कि अरे में नंबर कौन कौन से हैं वो किस तरीके से अरेंज हुए हैं, तो वो तो एक रैंडम वो है ना, वो नंबर मेरे पास किसी एंगल तरीके से भी आ सकते हैं। ठीक है, तो मकसद एनालिसिस करना है। आप लोग पता नहीं क्यों ऐसे तके हुए, लेकिन अटेंडेंस लेते हैं फिर 5 मिनट ब्रेक कर लें। जी सर इसकी जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे तो हम हर एक स्टेप जो है उसको मतलब लिखेंगे कि छोटे जो स्टेप्स इसमें आते हैं, हर एक स्टेप के यहाँ फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इफ स्टेटमेंट है, ये 1 + 2 10 + 2। हम जिस तरह मर्ज सॉर्ट का हमने किया था वो ट्री बनाएंगे, वो जो हर स्टेप का आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। अगर मैंने लिखा हो कि एग्जैक्ट कैलकुलेट करें तो एग्जैक्ट करना है, अगर मैंने कहा है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी करें तो वो अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट मैं मांगता नहीं हूँ अक्सर। ठीक है, सुकून हो गया सर बस मांगे भी ना ये काइंडली। पता नहीं, मैं थोड़ा सा